नहीं हो पाया। कैसे हैं आप लोग सभी? व्हाट्स हैपनिंग? कहाँ से जुड़े हो आप लोग? सुबह को थोड़ा बिजी था मैं, मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस जाना पड़ा फेक इट इंडिया रिकॉर्डिंग के लिए। केम बैक, हैड लंच, मेड माय कॉफी एज यूजुअल विद माय कॉफी कल्चर मग। थैंक यू द लवली पीपल एट कॉफी कल्चर भीलवाड़ा। दोस्तों थोड़ा स्लो न्यूज डे है, पर मैंने कहा यार एक शो बनता है आप लोग के साथ। अगर मैं देखूं पिछले 10-15 दिन या अगर पिछले कुछ 2-3 हफ्ते देखूं यहाँ पे, तो आई थिंक मैक्सिमम कमेंट्स आप लोग में से आते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द शो टॉपिक इज। इट्स अबाउट इंडियाज इनएबिलिटी टू विन एन आईसीसी ट्रॉफी नाउ फॉर 10 years। 2013 आखिरी बार जब हमें धोनी की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता इंग्लैंड में। एंड आई गेट इट, अ लॉट ऑफ यू हैव रेज्ड वैलिड कंसर्न्स कि भैया इतने प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, इतने प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने प्लेयर्स इंजर्ड हैं, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, टीम WTC टेस्ट फाइनल हारी, टीम T20 वर्ल्ड कप पिछले साल कुछ नहीं कर पाई। तो इज दिस अ बैड फेज फॉर इंडियन क्रिकेट? क्या वनडे वर्ल्ड कप के चांसेस हैं? मेरा ये मानना है कि मैक्सिमम व्यूअर्स के कमेंट्स में अगर अपने इस चैनल को ऐड करूं, एज वेल एज व्हेन आई गो ऑन क्रिकेट नेक्स्ट, व्हेन आई गो ऑन न्यूज लाइव, न्यूज 9 लाइव, देयर सीम्स टू बी अ लॉट ऑफ कंसर्न अमंग व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जो मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। हाय शशांक, हाउ आर यू? बढ़िया, आई एम फाइन, होप यू आर वेल। तो मैक्सिमम व्यूअर्स को लग रहा है ये मतलब दिस इज माय रीडिंग ऑफ द सिचुएशन कि लोग को थोड़ी तकलीफ है, फिक्र है कि टीम की बैलेंस खराब है, वर्ल्ड कप स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है, ट्रैवल बहुत है, इंडिया का जो वनडे क्रिकेट है शायद वो उस लायक नहीं है कि वर्ल्ड कप जीते। आई गेट कि आप लोग अपने कंसर्न्स लेकर कहां से आ रहे हैं, बट मेरा ये मानना है लाइक दैट फेमस मीम ऑफ इमरान खान कि आपको घबराना नहीं है। क्यों आपको घबराना नहीं है? और हो सके कि मैं गलत साबित हूं, आई होप आई एम राइट इन माई प्रेडिक्शन। कुछ चीजें हैं वनडे क्रिकेट को लेकर। एक तो वनडे क्रिकेट का ओवरऑल हेल्थ, आई थिंक T20s बहुत कंपेटिटिव हैं, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट तो है ही बहुत कंपेटिटिव, बट वनडे क्रिकेट इज इन द मोस्ट क्रिटिकल हेल्थ। बहुत लोग कमेंटेटर्स, एनालिस्ट, पुराने खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, बहुत लोग वो कह चुके कि यार वनडे क्रिकेट को रेलेवेंट रखने के लिए कुछ तो आईसीसी गवर्निंग बॉडी को करना पड़ेगा। एंड वी सीन बेन स्टोक्स रिटायर्ड फ्रॉम ODIs एट द एज ऑफ 31, यानी कि बेन स्टोक्स सेड आई डोंट वांट टू गो टू इंडिया एंड हेल्प इंग्लैंड retain the one day World Cup we won. You are feared of Rahul Dravid selection, says Krishna. If you can elaborate, Krishna, I'll take up your comments. But let's just stick to the topic for today's show for now. तो मेरा ये मानना है कि there's not enough consistent quality one day teams going around. I think Australia, अगर हम इंडिया के बारे में देखें, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड इंडिया में बहुत अच्छा है. I think they are the top team for the World Cup along with India, and I'll tell you why I think India is still a top team. England, yes, baseball, fantastic, World Cup, T20 World Cup winners, ODI World Cup winners, a terrific one day side. पर इंडिया में इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं. यही टीम जो T20 वर्ल्ड कप जीती और जो वनडे वर्ल्ड कप जीती, पिछले 4 साल में वो 3 बार इंडिया आ चुकी है और 6 में सिर्फ 2 वनडे मैच जीत चुकी है. सो यस, इंग्लैंड विल बी अ टॉप 4 टीम, बट दे आर नॉट एज लीथल इन इंडिया एज दे आर इन अदर कंट्रीज. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे टीम्स हैं जो इतने कंपेटिटिव नहीं है. दूसरी बात, ये विश्व वर्ल्ड कप इंडिया में होगा और इंडिया में दोस्तों, इंडिया को हराना बहुत बहुत मुश्किल है वनडे फॉर्मेट में. सिंस 2015, दैट मींस 8 years ago, only one team has won a bilateral ODI series in India. आप रिकॉर्ड देखिए दोस्तों, कोई भी टीम इंडिया आके ऑस्ट्रेलिया के सिवाय 2019 में और 2023 में, इस साल कोई भी टीम इंडिया आकर इंडिया को एक सीरीज में नहीं हरा सकती. अब इससे पहले कि आप कहें कि वो बायलैटरल है, ये वनडे है, वनडे में इतना फर्क नहीं पड़ता दोस्तों. वनडेज में you're playing 9 different teams, of which I think only 3 are actually competitive. तो होम फैक्टर देख के, होम एडवांटेज देख के, होम रिकॉर्ड देख के, हमारे टीम को देख के, और my perceived lack of enough quality teams, I think इंडिया आंख बंद करके ODI सेमीफाइनल्स तक जा सकती है. वहां पे कौन मिले क्या पता, मुंबई हो, कोलकाता हो, सेमीफाइनल्स में अगर जो 15, 16 और 19 और 22 ये सारे T20 और वर्ल्ड कप्स को देखते हुए, अगर वो बस वो सेमीफाइनल वाला जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक फियर फैक्टर आता है, वो हट जाए, तो इंडिया कैन एक्चुअली गो स्ट्रेट टू द वर्ल्ड कप फाइनल. दिस इज जस्ट माय रीडिंग. अब मैं मानता हूं आप लोग बोलेंगे कि यार देखो, बुमराह नहीं है, केएल राहुल नहीं है, अय्यर नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी
to stay competitive in the one-day format, which, like I've said, मेरे हिसाब से it's the weakest one-day format. I'm actually not too concerned. Like many people have been commenting here over the last few weeks कि हमें उम्मीद नहीं है, ये टीम तो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगी, फलाना ढिमकाना. I get आपकी फिक्र कहाँ से आती है, but I'm saying थोड़ा हौसला रखिए. वनडे में ये टीम फिर भी ठीक है. That said, अगर ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होता, इंग्लैंड में होता, साउथ अफ्रीका में होता, तो मैं बोलता हाँ ये टीम सेमीफाइनल्स तक नहीं जाएगी, बट घर पे इस टीम को हराना बहुत मुश्किल है. Let's take some comments, shall we? SS98 has given their World Cup 11 Rohit, Gill, Virat, Jadeja, Rahul, Samson, Hardik, Shardul, Kuldeep, Siraj, Bumrah. यानी कि SS98, whatever your name is, you think that KL Rahul will be fit for the World Cup. You think Bumrah will be fit for the World Cup, but you don't think Shreyas Iyer will be fit for the World Cup. Interesting. मेरा इस पे थोड़ा different take है. Shreyas Iyer's injury came much before KL Rahul's. He's had more time. He's much closer to getting back. And given his outstanding record at number 4 in ODIs, I think इसी तरह कम करता हूँ. I think Shreyas Iyer, if he gets past fit, will walk straight back. I don't think KL Rahul has as much time. और दूसरी बात, अगर KL Rahul fit भी होते हैं, is he going to come back as Rahul Dravid and Rohit Sharma wanted as your World Cup wicketkeeper? No, he may come back in time as a batsman, but he's not going to be your keeper. That's why I'm glad to see that SS98 has given Sanju Samson as the only keeper. I agree with you. India's keeper for the ODI World Cup will be Sanju Samson. So let's see how close we are with our predictions. Umar Mughal कह रहे हैं upcoming World Cups, if India ended up on the losing side, coach Dravid won't be given an extension. Absolutely. Even if India win the World Cup, Dravid's not getting an extension. I can tell you this with some degree of certainty. Crick Mania is back. Welcome back. ICC should only schedule tri-series. हाँ बिल्कुल ये इस बात को लेकर हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं. हार्दिक कह रहे हैं भाई टॉप 4 टीम्स विल बी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक कैप्स एंड लंका लायंस. ठीक है, आपको लगता है, मैं तो ये कहता हूं इट विल बी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड मोस्ट लाइकली पाकिस्तान. आई टेल यू क्यों. अगर केन विलियमसन और माइकल ब्रेसवेल फिट होते तो मैं हमेशा की तरह मैं न्यूजीलैंड टीम को टॉप 4 में डालता, क्योंकि इनका रिकॉर्ड अच्छा है वनडे वर्ल्ड कप्स में और इंडिया के अगेंस्ट. लेकिन विदाउट विलियमसन, विदाउट माइकल ब्रेसवेल, देयर डाउन टू वेरी की प्लेयर्स. इस बार वो नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका मैं मानता हूं हमेशा चोक कर जाएगी वनडे वर्ल्ड कप में. श्रीलंका और इन द क्वालिफायर स्टेज, श्रीलंका का रिकॉर्ड इंडिया में बहुत खराब है. पाकिस्तान, I don't rank them very highly as a one-day team. I know they're ranked number 2, but ये इतनी inconsistent टीम है. अगर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी फुल कैपेबिलिटीज तक खेला, सारे ऑफ फील्ड प्रेशर को एक साइड किया, then they're my top 4. So it's India, England, Australia, Pakistan are my top 4. Devang Zain, hello bhai, office भागना है, but good to see you again. We'll come back and watch later. बिल्कुल Devang, have a good day in office. Come back and see it. Is it too late to try players like Tilak Verma, Jitesh, and Dhruv Jurel? Ashutosh, very good point. But you see, less than 3 months away from a World Cup, India selectors and team management are not going to bring in any new players. You have to. They made this mistake in 2019, 2 months before the World Cup. They dropped their most consistent middle order batsman in Amati Rayudu, and they brought in a rank newcomer in Vijay Shankar. We saw them. Now, a World Cup squad's planning has to be begun 10-12 months before the World Cup. India's World Cup squad, ye likh ke le lo mere se, it will include only players who have been playing ODIs for the last 10 months. Shikhar Dhawan was dropped 6 months ago. He's not going to be around. No new face will be brought in. These names you've taken, inka time aayega. I believe at least 2 of them should be in India's next T20I squad. Definitely Tilak, Jitesh and Dhruv Jurel. Inka time aayega, especially Tilak and Jitesh. They might be playing T20s by the time the year's over. And if not, next year's T20I World Cup will definitely see some of these names. But right now, they don't have the credibility. And more than that, Ashutosh, 3 months from a World Cup, you're not going to bring in players who've not played for India. It is professional suicide. वो नहीं होगा. I think England going to give competition. Absolutely, you cannot discard England. England have won the World Cup. They're one-day World Cup defending champions. They're T20 World Cup defending champions. They're baseball specialists. But India के अंदर इनको थोड़ा अपना game lift करना पड़ेगा. I definitely have them for the top 4, but I don't think they'll go to the final. Do you think Deepak Chahar can do well in the World Cup? Rakesh, he's just not played enough cricket. ये बंदा 3 मैच खेल के, IPL मैच खेल के, इसकी कमर जाती है. You cannot be counting Deepak Chahar. Deepak Chahar has not played ODIs for a long time. No chance. You cannot have half-fit players coming. The guy cannot bowl 4 overs. You want him to play a World Cup?
Chance nahi hai. SS98, if given a choice, will India prefer playing Pakistan in Kolkata or Australia in Mumbai? Probably Australia and Mumbai, to be honest. Shreyas Iyer over Sky and World Cup team? Oh, absolutely, hands down. I will say it again. Count the 31 or 32 one-day matches that Suryakumar Yadav has played, Vivek. Every single ODI chance that Suryakumar Yadav has got has come when a main player has been injured or has been rested. Suryakumar Yadav is not a first choice one-day player. आप जाके इनका हर वनडे मैच देखिए, हर स्कोर कार्ड में आपको एक नाम मिसिंग होगा. Suryakumar Yadav is a backup player. He might be in India's World Cup squad, but he is not going to be in India's first choice 11. Even if Shreyas Iyer is not picked, Suryakumar Yadav will not start India's World Cup campaign. He's got enough opportunities. He's made a mess. He is far from proving himself as a one-day player. Outstanding T20I player. After 32 ODIs, his record is very poor. He got 3 golden ducks. He is not, the selectors still don't see Sky as a first 11 player. If Shreyas Iyer comes back, he's walking in, he's batting at number 4 and he's playing every single World Cup match. Jamie, finally caught you live, says Saurabh. Do you think we would even dare to attempt baseball? I think India's team did attempt baseball. Did you watch the WTC final? What kind of shots were Rohit Sharma playing? What kind of shot was Pujara playing, that ramp? What kind of shot did Virat Kohli play? The ball that Virat Kohli touched on 49 in the second innings, that ball, according to CricViz, had a 2% chance of getting a wicket. It was that wide a ball. Virat Kohli chased that ball and got out. If that's not India's attempt to play baseball, I don't know what is. India cannot do baseball. Umar keh rahe, Coach Greg Chappell did whatever Team India is making a total sense now. See, Greg Chappell, and I was there when Greg Chappell started his tenure. I attended a lot of his press conferences. He had the right thought in the sense that you need, like MS Dhoni and Gary Kirsten did, 11-12 months before the 2011 World Cup, MS Dhoni and Gary Kirsten sat down. And back then, दोस्तों, उस जमाने में हमारे पास अच्छे दिग्गज रीढ़ की हड्डी वाली सिलेक्शन कमेटी होती थी. आजकल की तरह मजाक वाले नहीं. A year before the 2011 World Cup, Dhoni said to the selectors, give me 25-30 players who I can try for the next 1 year. And India won the World Cup. 2007, Greg Chappell had the same approach. I wrote an article a year and a half before the 2007 World Cup. I'll try and find the link and paste it for you at Cricinfo when I was there. And I said Greg Chappell is on the right track because he identified the right mix of youth and experience. अगर आप इंडिया का 2007 वनडे वर्ल्ड कप स्क्वाड देखिए तो ये ऑल टाइम बेस्ट वनडे स्क्वाड था. लेकिन हुआ क्या? बांग्लादेश के हाथों मार खा गई, श्रीलंका हाथों मार खा गई. But Greg Chappell's approach to one-day cricket was still the correct one. It didn't work. He tried to tinker too much with the test team and he paid the price for it. But as far as the one-day World Cup goes, 12-15 months before the 2007 World Cup, Greg Chappell and Rahul Dravid were on the right track. Absolutely. What are chances that Mayank will look at the backup middle order batsman? In one days, no chance. No chance. आयरलैंड का स्क्वाड कैसा हो? आयरलैंड का स्क्वाड मोटा मोटा 1-2 प्लेयर शायद नहीं हो. हार्दिक पांड्या शायद नहीं हो. It will be the same almost as whatever the next thing is. We have no idea what India's next T20I squad is going to look like, right? Rohit probably done, Virat maybe done. We don't know. No KL Rahul, no Iyer. So the 5 T20I squad that is picked for the West Indies tour, that will be an indication on the Ireland squad. Crickmania saying, Jay, I'm very hopeful about India's selection. I think Agarkar will do well. I just don't see Agarkar becoming a selector. He gets paid he gets paid 10 times as much for being a TV analyst and commentator. Why would he want to give up a job which he does 4 months of the year from an AC studio and do a job which requires him to do a lot more? I just don't think he'll become the selector. Unless the BCCI pays him 3 times as much as what the host broadcaster does. हार्दिक भाई, जय भाई, आपकी बात सही है कि इंडिया बायलैटरल में जीत जाता है, लेकिन बायलैटरल का प्रेशर वर्ल्ड कप प्रेशर अलग होता है. बिल्कुल, लेकिन ये घर पे वर्ल्ड कप है तो घर पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है एज कंपेयर टू गोइंग ओवरसीज एंड विनिंग. आपको सारे ग्राउंड्स की नॉलेज है. अश्विन आर्या कहने, जय भाई इस बार भी कोई 3D प्लेयर मिलेगा इंडियन टीम को? होपफुली नॉट. दिस लॉर्ड्स पिच लुक्स लाइक इट विल कीप बेटर फॉर बैटिंग. Yeah, absolutely. Let's stick to the one-day topic, not the Ashes. Will Washington get selected for World Cup? I hope so. I actually have him in my World Cup 15. But again, if he's not fit, I mean, he's back now. But probably that you don't need an extra spin bowling all-rounder because you have Jadeja, you have Akshar. I think if the tracks are going to spin, Washington should play, but most likely that last spot will go to a pace bowler.
सो वो जुड़े कोहली रोहित धवन अपने प्राइम में 2019 का वर्ल्ड कप जिता नहीं पाए, इस साल तो कोई उम्मीद करना गलत है। नहीं देखो, शिखर धवन तो है नहीं यहाँ पे। 19 में सब कुछ ठीक था, पर इस बार मैं कह रहा हूं घर पे जीतना इस टीम, ये टीम जीत सकती है वर्ल्ड कप। तो देखो, रोहित बिल्कुल पास्ट इज प्राइम है, विराट कोहली ऑलमोस्ट अपने पास द प्राइम तक पहुंच चुके हैं, बट आई स्टिल थिंक क्योंकि ये घर पे वर्ल्ड कप है, ये लोग अगर 400 रन भी मारे पूरे वर्ल्ड कप में तो ये टीम आराम से सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाएगी। सर वनडे वर्ल्ड कप में प्लेयर सब्सिट्यूट का कोई सिस्टम है क्या? ऐसा कुछ स्पेसिफिक रूल तो नहीं है, नहीं। If ODI is no longer competitive, does the trophy still command the same respect? No, sort of good question. I'll tell you, it does not in that sense. But my gut feeling is more than winning a T20I World Cup, more than winning a WTC championship, players and fans still feel कि one day World Cup is something else, because every single player, आप लिख के लीजिए मुझसे, every single player who's going to be playing across those 10 teams in this World Cup, they've all been drawn to cricket by watching World Cups, one day World Cups. And in their time, there was no T20s. Tests were around, but one day was the popular format in the 80s and the 90s. So every single World Cup player across 10 teams, he became a cricketer because of watching World Cup and World Cup memories. So that's why I think for the players, my gut feel is more than a WTC final or a T20 World Cup, players still want to win the World Cup because it's the longest running major trophy in cricket. That's my feeling. Hot Rod is saying, I don't think India will ICC trophy, too many loopholes. There are, but because it's in India, where since 2015, only one team has won a bilateral series, India are next to unbeatable. I don't feel borrowing Australia and England. There's enough competitive one-day teams. And because it's at home, it's very, very easy for India to walk into the semi-finals. अब उसके आगे क्या होगा? I don't know. But India are blindfolded walking into the semi-finals. Jay bhai, please start live video interactions. I actually do it, but I do it on a different platform. I do a live chat on Glance. वहां पे मैं बहुत सारे फैंस को लाता हूं, उसी चीज को यहां डुप्लीकेट करने में इतना मजा नहीं आएगा. That's why I keep my YouTube live to just you and me. But you can catch me on Glance and Raposo. For the last 15 months, I've got a range of guests. I've got common cricket fans, I've got journalists, I've got former players, I've got selectors, I've got analysts, I've got anchors, I've got many players and analysts have come there. I keep this show just to you and me. WT is considered an ICC trophy, then why are the pitches not created by ICC like every other ICC tournament? Well, that's because it's only 2 WTC finals old, so they're still learning. It's a neutral venue. The host board is involved in that. Plus, the pitch is far more important. A 5-day pitch is not like a 1-day pitch or a T20 pitch. ICC has more say when it comes to the smaller duration. To get a proper competitive test match venue, that requires more inputs from the local ground. That's why in the last 4 years, both ones have been the ECB. Yes, Nihar, finally someone has said it. This is golden chance. Absolutely, it's golden chance. Pratik is saying, I think Bumrah, Siraj, Shami, Chahal, Kuldeep are the 5 bowlers for India. Actually, I'm going to disagree with you. Chahal is not playing ODIs anymore. He's played one ODI this whole year. So if the selectors and the team management are not seeing him as a viable one-day option, I don't see him going to the World Cup. He's still a T20 bowler, but I think India have moved beyond Chahal as a one-day bowler. But yes, your point is there. None of them can bat. So India will left. Look, Bumrah, Siraj, Shami, Chahal, Kuldeep are never going to play in the same match. अगर बुमराह आते हैं तो मोस्ट लाइकली एक फास्ट बॉलर बाहर जाएगा. इफ बुमराह इज नॉट देयर, माय पेस बॉलिंग अटैक और माय बॉलिंग अटैक फॉर इंडिया राइट नाउ विद नो बुमराह विल बी शामी, सिराज, शार्दुल, हार्दिक, Kuldeep and Jadeja. Akshay Patel might come in, but you have Hardik Pandya. He can bowl you 5 to 7 overs. You're getting 10 from Shami, you're getting 10 from Siraj, you're getting 10 from Kuldeep, you're getting 10 from Jaddu. Then you can rotate between the other bowlers. Due to IPL, foreigners will also adapt to our condition and may shock us. भाई 16 साल हो गए IPL को और पिछले 15 साल में कोई ज्यादा टीम यहाँ की जीत नहीं पाई है. So I'm not so sure it works. If that were the case, you would have seen all these teams. यहाँ पे इंग्लैंड हारी है पिछले 10 साल में, यहाँ पे न्यूजीलैंड हारी है. Since 2015, only one team has won a bilateral series in India, and that's Australia. So I don't think the IPL actually works in one-day cricket.
Is the Ashes pundits criticizing friendly beer between the teams fair? No, no, it's rubbish, man. It's rubbish. Who are India's finisher? Hardik Pandya, Sanju Samson, and KL Rahul if fit. Samson is a tremendous finisher. Hardik Pandya is a tremendous finisher. You have Jadeja. If Jadeja can do what he did in that IPL final, na bhaiya us bande ko har match khilao. Will Bumrah return the same? No, Rishi, unfortunately not. Do you think ODI cricket should be divided into 4 innings? I don't think it needs that kind of a gimmick. No. शाहनवाज फिर से जुड़े हैं टिकट्स को लेकर। आज भैया बहुत परेशान हो टिकट्स को लेकर। भाई देखो, हम तो मीडिया वाले, हमें तो वैसे ही पास मिल जाएगा, तो आई एम एक्चुअली नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट टिकट्स, बट आईसीसी सेड ना कि वो कुछ दिन में वो दिखा देगी। Last 3 World Cups were won by the host. Absolutely. I'm telling you, I don't know why so many of you are worried. It's India's World Cup to lose. Who will be spinners for World Cup? Very limited choice. नहीं, बहुत है यार. You have Kuldeep. Kuldeep is India's leading one-day bowler this year. After Mohammad Siraj, India's leading wicket taker is Kuldeep. Kuldeep has done damn good. Chahal is not playing one days anymore. तो चहल से आप आगे बढ़िए. आपके पास शामी है, आपके पास बुमराह है, आपके पास उमरान मलिक है, आपके पास शार्दुल है, जडेजा है, अक्षर है, वॉशिंगटन सुंदर है, हार्दिक है. It's a decent bowling attack. Of course, आप चाहोगे कि बुमराह आए. I would love to see Prasidh Krishna there, पर वो नहीं है. But bowling is still decent. सर, अगर वर्ल्ड कप रोहित शर्मा एज कैप्टन जीतते हैं तो अगले साल का T20 वर्ल्ड कप खेलेगा? नहीं, रोहित शर्मा अपना आखिरी T20 मैच खेल चुके हैं, वो अब नहीं आएंगे. आप तो ये बताओ कि हाउ वुड टिंकू जिया सेलिब्रेट इफ वी विन दिस वर्ल्ड कप? Would love him to interview. You know what? I actually raised this idea during lockdown, but because the Tinku Jia character is an IP of a major media house like Times of India, I'm actually not allowed to use that character anywhere else. But yes, it would be fun, Arpit, to watch Tinku celebrate and as somebody else. Rakesh keh rahe, JY, do you think Shubman Gill potential lead India in all format? Absolutely. I've been saying this for the last 2 years. Shubman Gill is India's next test and one-day captain in waiting. Bilkul. Why no Arshdeep? Well, you have to ask the selectors. Arshdeep has played about 30 T20s in the last year and a half. I think he's played 1 ODI. तो खुद team management, खुद selectors Arshdeep Singh को one-day bowler नहीं मानते हैं. So I don't think. I mean, I would love to see him play one days, but when he's only played 1 in the last 18 months, I don't see him coming in. Sran, Khalil, Arshdeep. Sran तो गए, Khalil गए. Arshdeep, पता नहीं, I don't know why. He's played about 30 T20s. And I think he's played 1 ODI, so वो नहीं है scheme में. Pratik is saying definitely this is the best chance for India because ODI is the best format that suits our team. Yep, between tests, the test team is broken. The T20 team needs a major rehaul, a reset. One day team, of course, पंत होते हैं. अगर पंत, श्रेयस अय्यर, बुमराह और केएल राहुल चारों फिट होते, मैं कहता इंडिया ये वर्ल्ड कप तो लेके जाएगी because that's a damn good one-day team. When KL Rahul, Rishabh Pant, Shreyas Iyer and Bumrah come back, that's a damn good one-day team. So वो कह रहे हैं, सर शामी के पास व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुछ स्किल्स नहीं है. स्किल्स थे लेकिन अब नहीं है. क्या है कि ना, लोग अक्सर T20 के बेसिस पर लोग को वन डे बॉलर बनाते हैं. शमी आई हैव नेवर सीन शमी एज अ नेचुरल T20 बॉलर. आई थिंक वनडे में वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब फिटनेस को लेकर मुझे थोड़े डाउट्स है. मोहम्मद शमी ने विकेट्स बहुत लिए, लेकिन मैंने कभी उन्हें T20 बॉलर नहीं माना. और आई थिंक सेलेक्टर्स भी मेरी बात से थोड़ी सहमत होंगे बिकॉज 1.5 साल तक शामी T20 से बाहर थे. बुमराह इंजर्ड हुए तो वो वापस लाए. अगर शामी नेचुरल T20 बॉलर होते तो 1.5 साल से वो टीम से बाहर क्यों थे? तो आई थिंक ही स्टिल अ गुड वन-डे बॉलर, बट T20 नहीं, बिल्कुल नहीं. Who will be the highest run scorer for India? I said this in yesterday's show. Or was it day before yesterday? Shubman Gill is on track to break Sachin's record for the most runs in a single edition. World Cup loss equals end of Rohit Sharma? Absolutely. How was Venkatesh Iyer, Shivam Dube, Vijay Shankar? Venkatesh Iyer had a very good trophy. Shivam Dube was decent. Vijay Shankar was not bowling, but I think he got some runs. But look, like I said, 3 months from the World Cup, you're not going to bring these players. शिवम दुबे नहीं खेल चुके हैं 2 साल से. शंकर तो 4 साल से नहीं खेल सके. हाउ कैन यू इवन थिंक दैट अ प्लेयर हु इज नॉट बीन इन इंडिया स्क्वाड फॉर द लास्ट 10 months कैन प्ले नाउ? 3 months बिफोर अ वर्ल्ड कप यू वांट दीज गाइज टू कम इन? चांस नहीं है यार. ड्यू फैक्टर, धर्मशाला यस, लखनऊ मे बी, कोलकाता, बियॉन्ड दैट नॉट रियली. दिल्ली मे बी. I hope this isn't the case, but I really want Pant can come back in the team. See, Pant the batsman could come back. Can Pant the keeper come back? I don't know. It's going to take a
A damn lot of effort for that boy to come back and do things as he was. Batting फिर भी keeper batsman, I don't think so. जय भाई भाई मेरा नाम जैमी नहीं है. इंडिया इस बार जरूर जीतेगी वर्ल्ड कप, बस रोहित शर्मा फॉर्म में आ जाए. इनका वनडे फॉर्म इतना खराब नहीं है, इनका T20 फॉर्म बहुत खराब है. सिलेक्टर्स कहां से आ गए? कुछ दिन पहले आप बोल रहे थे कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं है. ये ऑफिशियली ये एक सिलेक्शन कमेटी कभी अनवेल नहीं हुआ गया था. ये नाम के वास्ते सूत्रों के अनुसार ये 4 शख्स जो हैं ये टीम सेलेक्ट करती है, लेकिन ये कब करते हैं, किससे मिलते हैं, इसको मीडिया को कोई आइडिया नहीं है. तो आई डोंट नो. सिर्फ ऑफिशियली मीडिया को बताया गया था कि SS दास सिलेक्शन कमेटी हेड है. बाकी 3 कब अपॉइंट हुए इसका कुछ अनाउंसमेंट नहीं है. कुछ आर्टिकल्स हैं ऑनलाइन बट दीज आर नॉट वेरीफाइड. तो I hope the selectors can do something. What will be the middle order in World Cup? Shreyas 4, Samson 5, Pandya 6 and Jadeja 7. सर प्लीज केएल राहुल से तो उम्मीद ना रखें आप. मैं नहीं रख रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि राहुल द्रविड़ जब तक कोच हैं तो जैसे ही केएल राहुल उस फिटनेस टेस्ट को पास करेंगे, ये उनके लिए लाल कारपेट इनोवा गाड़ी भेज के इनको NCA से एयरपोर्ट से होटल तक, होटल से ग्राउंड तक ये लोग इनका रास्ता साफ कर देंगे. क्योंकि तीनों फॉर्मेट में केएल राहुल का मिडिल ऑर्डर रिकॉर्ड फिर भी अच्छा है. टेस्ट से तो इसको दूर रखो, T20 से इसको रिटायर कर दो, वनडे में मिडिल ऑर्डर में, लेकिन कीपर नहीं, सिर्फ एज अ बैट्समैन केएल राहुल का योगदान हो सकता है फिर भी. ऑस्ट्रेलिया ट्राई नेथन एलिस जस्ट 3 months बिफोर T20. T20 my friend, do not compare T20 to one day. T20 is a lottery. One day needs some stability. You cannot be bringing players in a one day format. If someone has not played one days, how can you bring him 3 months before? Ashutosh, यार क्या comment कर रहे हो? Don't compare T20 to one day. It's very, very different game, Babu. Aditya, we would need 2 left-handers in 11. Washi or Akshar? You've got Akshar, you've got Jadeja, you've got Ishan Kishan. Ishan Kishan will probably play also because he's a very good friend of Rohit Sharma. Will Lucknow pitch be ready? Well, look, they have 3 strips there. तो तीनों में से एक पाटा है, 2 स्पिनिंग ट्रैक्स है, इनमें से 2 तो रेडी है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं होगी. Indian cricket crumbles under pressure. Not Indian cricket as a whole, but in knockout matches somehow for the last 10 years इनके कान के बीच जो भी है ना वो चलता नहीं है. Is BCCI a proper government body? Never. It never has been, never will be. ये तो 30 साल से 25 साल से मेरे को ही मालूम है, चांस नहीं है. Do you think after dead pitch in IPL will Ekana improve and make batting friendly tracks? So Akash, they have 3 tracks. एक पाटा है, 2 टर्निंग ट्रैक्स, लेकिन अब भी 3 महीने बाकी हैं तो कुछ हो सकता है. कैन अश्विन मेक अ भाई अश्विन का नाम कहां से ले रहे हो अभिलाष? बंदा 1.5 साल से तो वनडे खेला नहीं है. आई थिंक हिज लास्ट वनडे मैच वाज इन Jan of 2022. अश्विन को कहां से ला रहे हो भाई? अश्विन वनडे वर्ल्ड कप क्यों खेलेगा यार? अगेन T20 वर्ल्ड कप ही शुडंट हैव गॉन. ये नहीं है भाई. अगर ये टीम अश्विन को लाएंगे, हु इज काउंटिंग अबाउट विजय शंकर, वेंकटेश अय्यर, ये सब अगर ये आ गए ना फिर तो मैं खुद छोड़ दूंगा ये लाइन भाई. नहीं चांस नहीं है. वर्ल्ड कप के बाद इंडिया का फ्यूचर क्या है? वेल फ्यूचर होपफुली कुछ चेंजेस आएंगे. देखो T20 अगले साल के T20 वर्ल्ड कप में जून जुलाई के महीने में जहां भी होगा, हो सके वेस्ट इंडीज और फ्लोरिडा में ना हो, इंडिया को T20 टीम की प्लानिंग आज से करनी पड़ेगी. चेंजेस आज से आने पड़ेंगे. WTC साइकिल जुलाई 12 से शुरू होने वाला है. मैं शॉक्ड हूं कि अभी भी कुछ प्लेयर्स वहां पे हैं. उसके आगे पोस्ट दिस वर्ल्ड कप दोस्तों, रोहित शर्मा 3 फॉर्मेट प्लेयर नहीं रहेंगे, विराट कोहली 3 फॉर्मेट प्लेयर नहीं रहेंगे. तो कुछ महान दिग्गज प्लेयर्स को जब ये फेज आउट करेंगे तो नए प्लेयर्स आएंगे, वो लड़खड़ाएंगे, वो फेल होंगे, टीम मैचेस हारेगी. बट टीम के साथ कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है फ्रॉम द सिलेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द फैंस पॉइंट ऑफ व्यू. आप सोचिए जिस दिन अश्विन टेस्ट छोड़ेंगे, जडेजा टेस्ट छोड़ेंगे, कोहली सब जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि टीम स्ट्रगल करेगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ यू ऑन दिस शो राइट नाउ यू स्टिक एंड कंसिस्टेंटली एटलीस्ट बैक द टीम. क्योंकि देखो चेंज होगा, ट्रांजिशन होगा, बदलाव होगा, और ये बदलाव और ट्रांजिशन के बाद अक्सर पूरे विश्व में कितने टीम्स ने स्ट्रगल किया है, तो इंडिया बहुत स्ट्रगल करेगी. एंड डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज आफ्टर 2024 स्पेशली. T20 जैसे फास्ट पेस फॉर्मेट की वजह से लोगों का टेस्ट ओडीआई में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है. वनडे में डेफिनेटली टेस्ट नहीं, टेस्ट अभी भी अलग लेवल है यार. जो हम देख रहे हैं आजकल टेस्ट क्रिकेट, आई हैव नेवर सीन टेस्ट क्रिकेट सो कंपेटिटिव डिस्पाइट द स्टैंडर्ड फॉलोइंग. रोहित शर्मा अगर हर वर्ल्ड कप हारे तो क्या इस वर्ल्ड कप में आखिरी बार इंडियन जर्सी में दिखेंगे?
यप, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ना, वो जाएंगे। आपके पास सुबोध, पिछले साल रोहित शर्मा को अगर अगर हम कॉर्पोरेट लिंगो, कॉर्पोरेट जार्गन का इस्तेमाल करें, इनको KRA दिया गया था। आपके पास तीन काम है, आपको T20 वर्ल्ड कप जीतना है, आपको WTC जीतना है, आपको वनडे वर्ल्ड कप जीतना है। आप 35 साल के हो, आप हर 4 मैच के बाद आप छुट्टी लेते हो, या आपकी बॉडी ब्रेक डाउन करती है, लेकिन फिर भी आप दिग्गज हो, आप 5 IPL टाइटल जीत चुके हो, आपके पास बहुत रन है, आप विराट कोहली के बाद इस टीम के बेस्ट प्लेयर हो। हम आपको तीन काम देंगे, T20 वर्ल्ड कप जीतो, WTC फाइनल जीतो, वर्ल्ड कप जीतो। दो में तो रोहित बाबू अटर फेल हो चुके हैं। वर्ल्ड कप के बाद जीते ना जीते रोहित शर्मा नहीं दिखेंगे, वनडे में नहीं दिखेंगे, T20 में तो ऑलरेडी आई थिंक इज प्लेड हिज लास्ट मैच, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट आई एम एंटी रोहित। रोहित का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, रोहित द बैट्समैन का, लेकिन जब 35 की उम्र में आप इंजरी प्रोन हो, आप हर 4 सीरीज के बाद आप इंजर्ड हो जाते हो या रेस्ट लेते हो, आपको BCCI ने एक साफ साफ तीन काम दिया और उन तीन में से दो तो आप नहीं कर पाए, तो एक जीतने से कोई गारंटी नहीं कि वो आगे खेलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं हो सके वो टेस्ट और खेले, लेकिन T20 और वनडे नहीं। सूर्या को एज अ फिनिश ODI में यूज करना चाहिए। भाई सूर्या ने 32 वनडे में किया क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। 4 पे खिलाया, 3 पे खिलाया, ओपनिंग उनको ना तो कुछ सेटल रोल दिया, और यार 30-32 वनडे मैच खेलने के बाद आप फिर भी अपनी जगह कायम नहीं कर पाए हो, तो स्काई की बातें क्यों रही है? स्काई से आगे बढ़ो, स्काई आपको वर्ल्ड कप नहीं जिता पाएंगे। ईशान किशन विल नॉट बी सिलेक्टेड इन वर्ल्ड कप 15, KL and Samson, KL will be third opener. KL Rahul has spent the majority of the last few years opening in the middle order. So if KL Rahul does come back, he's definitely not going to be an opener. He'll be used at number 5 where his record is outstanding. KL Rahul as opener, nahin. They'll take someone else. They won't take him. Pakistan board says it is still not decided whether to participate. क्या ढोल नगाड़ों के साथ बुलाना पड़ेगा इनको? अरे छोड़ो यार, उनका तो देश ही बर्बाद है यार। Hello from New York City, Tibetan nomad. ताशी दिले, कैसे हो? Sir, how good is Nihal Vadera and Vishnu Vinod? Nihal Vadera is very good. Vishnu Vinod has a more successful domestic career. लेकिन फिर भी ये लोग अभी T20 टीम के आसपास नहीं है ये लोग। चलिए last question. One thing I have noticed in the players is that they dismiss even constructive criticism as trolling hate. This विराट कोहली के टाइम पे शुरू हुआ ये। I don't see players like Rohit Kohli and seek feedback. नहीं बिल्कुल, you're absolutely spot on. I know enough journalists who've been publicly ridiculed, publicly admonished. Outside of press conferences, Virat Kohli's made comments. This is Virat Kohli शास्त्री के टाइम पे हुआ ये कि मीडिया को साइड में हटा दो। एंड दिस इज व्हाई जब विराट कोहली का बुरा टाइम चल रहा था तो कोई भी मीडिया वाला ने खुल के उनका साथ नहीं दिया। विराट कोहली ने मीडिया को दूर रखा, भले ही मीडिया गंद हो, निकम्मा हो, लेकिन आपको मीडिया को पास रखना पड़ेगा। ये MS धोनी को मालूम था, ये द्रविड़ को मालूम था, ये सचिन को मालूम था, ये सौरव को मालूम था, ये रोहित को भी मालूम है, लेकिन विराट कोहली he did not regard the media, and that gap, that distance he kept, those same people when he was in a slump, they didn't come to his support. तो आप जो बोते हो आपको वही मिलता है भाई। कितने चांस से इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा? 10 में से 9, ठीक है। चलिए दोस्तों, आधा घंटा हो चुका है, मुझे निकलना है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। प्लीज हिट दैट लाइक बटन व्हेन यू आर हियर। आई विल सी यू अगेन टुमारो। हैव अ ग्रेट थर्सडे, एंजॉय योर इवनिंग। मैं आपसे कल मिलूंगा। टाटा, टेक केयर, जय हिंद।